Start. Welcome, welcome, welcome. Welcome every morning with a smile. Look on the new day as another special gift from your creator. A very fresh morning to one and all present over here. I, Master Bhakra Rajendra, welcome all of you on this very auspicious day. I welcome our today's guest of honor, Mr. Nikhil Aglave. Nextly, I welcome our principal, Mr. A.R. Merikar, Head of Electrical Department, Mrs. Gunzar, Alumni Coordinator of Electrical Department, Mrs. P.A. Thorat. Last but not the least, I welcome all our precious audience. Today, we all have gathered here for a guest session by one of our profound alumni, Mr. Nikhil Aglave. Alumni are the torchbearers for our institute's legacy, and their return is a shining testament to the enduring bonds and the shared commitment to the excellence. Mr. Nikhil Aglave completed his diploma in electrical engineering from an institute in year 2013 and 14. Later on, he completed his graduation from Marathwada Mitra Mandal College of Engineering in year 2021. Currently, he is working as senior production engineer at Eton. Now, we look forward to seek guidance from Sir on topic career guidelines and opportunities in electrical department. Sir, please. Yes, I just would like to have a permission that it's okay if I talk in Marathi. Yeah. Only, कारण only असं the आहे issue is only the issue is that some students might be from like OMS. So just ask Deepak sir, Narkhede sir, is it okay if he talks in Marathi completely, or should it be a mixture of Hindi, English, and Marathi? Yes, sir. I There are can some talk students fully. who are OMS, so It is should a talk in combination of Marathi and Hindi, if possible. Okay. Okay, I will. English and Hindi will be then okay. I think it will be. Yeah. So why actually I asked for that now that because I'm working in Pondicherry and it's very hardly I got chance to speak in Marathi. So that that's the one part. And okay, then we will make forward. Thank you for having, and I'm very happy that I got chance to see you the faces when I spent time in diploma, that Mirika sir, Narkede sir, Gunza ma'am, that all the memories are just flashed out, and that all the knowledge I gathered at that time, and I enjoyed that time. So um, I'm sorry, actually, in this whole week I was so busy with the meetings, and there are activities going on in plant. So I didn't get a time to create an presentation. So I will just go through the topics one by one, and whenever anybody have doubts, any doubt, you can frankly ask, because it's all about just not for your career, but for your growth also, because career is a very small part of our life, but other knowledge gaining, but because I would like to tell you a story that when Albert Einstein was walking through the street in Germany, and he was holding too many books in his hand, and there was another guy walking beside him, and he was holding one book, and he's I think he didn't know that who is he, and he just said that Albert Einstein, that very arrogantly, that I am the professor of physics, and Albert Einstein very politely said that I'm student of the physics. So that's the difference, that mindset. While we are talking the mindset, that throughout life we have to gain knowledge, we have to study further, and through that we will build up our career. So directly I will come to the point, that what are the sectors in which you can build up your career. Briefly I will tell you that how many companies I have worked, I have served. That my first multinational was General Electric, GE.
Unfortunately, I spent two very less time in that, like 2 months only. After that, I worked in ABB Bangalore, UPS division. I worked as a technical support engineer there. After that, I joined Fuji Electric, a Japan-based company. Worked in Pune as a production engineer, and now I'm here in Eton. It's a Europe-based company, and I worked as a senior production engineer here. I have to look after the production manufacturing of three-phase UPS. So, and here we are manufacturing lots of products like switch gears, RMU, UPS, single phase UPS, three-phase UPS, server racks, data centers, like this kind of products we are manufacturing here. And so I will tell you the what kind of career path you can choose further. Currently, you are in core branch, means core electrical. So first and the basic requirement of any electrical manufacturing companies are design. So what kind of design? There are two parts. Design means a physical design you have to build up, like suppose any UPS is there and my cabinet is there. I have to build up a cabinet. But what should be the aspected dimensions and the cable dimension, like that? Everything you have to calculate. The selection of IGBT, fuses, rating. That you have to select all kind of calculations and that's the part of design. And another part of design means like the harness, like cable layout. That's the one part. That's the second part. After that, you have opportunity in R&D. So if you अगर आप कोई भी यूपीएस मैन्युफैक्चर करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपको कंपटीशन में भी बने रहना है। तो अगर आपको कंपटीशन में बना रहना है तो कुछ चीजें होती कि जैसे प्राइस हो गया, विजुअल अपीलिंग हो गई, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, आजकल एचएमआई आ गए, डिस्प्ले आ गए। डिस्प्ले अभी हर एक कंपनी चाहती है कि हम डिस्प्ले यूज ना करें, क्योंकि डिस्प्ले में सिंगल टाइप का इनपुट होता है और विजुअल ओनली आउटपुट होता है। तो एचएमआई इज व्हाट एचएमआई गिविंग एडवांटेज ना दैट we can make some changes through that interface. So that's the advantage, and that things can be do by R&D only. Nobody can just go and yes, we have to select HMI. There are some criteria. Nobody can select any kind of random product and random part for the product. And after that R&D, after that you have opportunities in NPD. So NPD means new product development. After that, NPD starts that before deploying any product to the market, we have to think in every aspect that what will be the cost for the manufacturing one product, including the manpower like labor, assembler, tester, everybody's salary, everything we have to calculate, and marketing, channel partners, sales, everything we have to consider, and plus profit, transportation, everything, and then we have to deploy the product in the market. So that the NPD, what will be your role in that? Because only technical engineers can understand, can decide the where we have to take a chance or not. So there only electrical engineers can contribute. And after that, simulation. So you might have heard that the some softwares like National Instrument, Test Sequence, ETAP, big kind of softwares, MATLAB. So these are the simulations. Why we need that? Because nowadays, if I want to manufacture a PCB and I have to take a trial of that PCB, so it will be very convenience that it will not be convenience that like I have to design, then send that design to the manufacturer, then he will manufacture that PCB, then I will bring that and I will assemble and take a trial of that PCB and I will check the efficiency, performance of that PCB. Instead of that, we can in simulation software we can just select the parts and assemble in that software like drawing only, and we can check the performance of that PCB. That kind of work you can do.
and like further opportunities like manufacturing, like I'm working in manufacturing industry. So like manufacturing, that you have to look after the manufacturing, what the processes are going on, cycle time क्या होता है कि जैसे कि मुझे अगर QPS बनाना है तो पहले सेल्स हमें प्लानिंग टीम को आइडिया देता है कि हाँ सर हमें ऐसा ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर का ऑर्डर आया है। तो फिर हम क्या करते हैं कि प्लानिंग टीम एक पूरा BOM बनाता है, बिल ऑफ मटेरियल, जिसमें होता है कि ये कंप्लीट QPS बनाने के लिए आपको ये सारी सारी चीजें चाहिए। फिर वो चीजें हमें मिलती है तो फिर असेंबली शुरू होती है। जब असेंबली हो जाती है तो टेस्टिंग होती है कि ये प्रोडक्ट हमारा जो स्टैंडर्ड है उससे मैच हो रहा है, टॉलरेंस है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद क्वालिटी चेक होता है और उसके बाद वो कस्टमर के पास जाता है। ये सारी चीजें होती है, तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, ये एक सेक्टर है। उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है सर्विस के लिए, जैसे कि आफ्टर सेल हो गया। तो पीरियडिक मेंटेनेंस होता है कि एक साल में 4 मेंटेनेंस हो गए, वारंटी पीरियड में वो फ्री होते हैं, बाद में एमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपको उसमें कंट्रीब्यूट करना होता है। वो भी एक आपको आपके लिए बहुत एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है कि सर्विस से। और उसके बाद बहुत बड़ा एक अपन बोल सकते हैं कि एक करियर ऑप्शन है कि रिन्यूएबल में आप काम कर सकते हैं। रिन्यूएबल में यानी ये सब चीजें तो आपको मतलब कोई भी कंपनी हो, मल्टीनेशनल हो या लोकल कंपनी हो, आपका अपॉर्चुनिटी है। लेकिन रिन्यूएबल मैं इस पे जरा ज्यादा बात करना चाहूंगा क्योंकि we have resources like the coal, we have nuclear energy, coal energy we are using for the manufacture for the generating electricity. So we have a limited resource, and now when I was in General Electric, मैं आपको वो चीज बताना चाहूंगा कि वो कंपनी जो है वो बहुत आगे का सोचती है, लाइक 50 years ahead, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो डेटा एनालिसिस करते हैं कि हमें मतलब रिन्यूएबल की डिमांड बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, तो अभी इफिशिएंसी बढ़ रही है उन चीजों की, और डिपेंडेंसी कैसी है कि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है कोल पे। बेसिकली अभी थर्मल प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए, डिपेंडेंसी बहुत है, तो धीरे धीरे वो कम हो रही है। लेकिन वो कब ड्रास्टिकली कब कम होगी, जब डिपेंडेंसी कब कम होगी, जब उसमें R&D जब ज्यादा बढ़ेगी तो। क्योंकि आगे जाके अभी कोई भी कंट्री ऐसे ओपन वॉर नहीं कर रही है कि हमारे पास मिसाइल है और आप एक दूसरे पे डालेंगे वॉर करेंगे, ऐसी सिचुएशन नहीं है। फ्यूचर ऐसा है कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो कंट्री डोमिनेंस करेगी। So that's the biggest career opportunity I can see in future. So study that, and उसके बाद है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स उसमें आप कंट्रोल सिग्नलिंग का, जैसे आपके पास डिजिटल कंट्रोल का सब्जेक्ट होगा, हमारे टाइम में तो था, वो डिजिटल कंट्रोल्स में आप सीख सकते हैं, उसमें भी एक बहुत अच्छा करियर है। उसके बाद हो गया एआई। एआई तो आपको फ्यूचर में जब आप आगे पढ़ेंगे, मतलब जैसे डिग्री के बाद अगर आप एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपको एआई अगर आप सीख सकते हो तो बहुत ही ज्यादा होगा। क्योंकि वन ऑफ आवर कस्टमर, मैं कस्टमर के साइट पे गया था, अमेजोन। तो अमेजोन ने पूरा एआई डिप्लॉय किया है, तो मतलब वहां पे कोई भी सुपरवाइजर नहीं है, तो वो एआई फेस रिकॉग्नाइज करके बताता है कि हाउ मेनी टाइम ये बंदा जो काम कर रहा है, XYZ पर्सन होगा, वो बंदा कितने टाइम तक खड़ा था, कितने टाइम बैठा था, उसने कितना आउटपुट दिया है। तो सुपरवाइज करने का जरूरत नहीं है। तो एआई टेक्नोलॉजी है, इससे अगर वो इंसान के लिए हो सकता है तो मशीन के भी लिए हो सकता है। क्योंकि अगर आपका सपोज मैं अगर यूपीएस की बात करूं, फ्यूचर में R&D अगर होता है तो एआई से मदद से हम यूपीएस का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। मतलब हमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट एंगेज करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मैन पावर एंगेज करने की जरूरत नहीं है कि इसका परफॉर्मेंस चेक करो, और वो रिलायबल हो। एआई में हमने बहुत जो पुराना डेटा होगा उसको फीड किया होगा, तो वो उसके साथ कंटिन्यूस कंपैरिजन करेगा और एक बेटर आउटपुट आपको देगा। उसके बाद होगा डाटा एनालिसिस, वही जो एआई के रिगार्डिंग है। डाटा एनालिसिस बहुत सारा मिसकंसेप्शन क्या हो जाता है कि अरे यार डाटा एनालिसिस तो आईटी का पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स क्या क्या कर सकते हैं। एक्चुअली डाटा एनालिसिस एक हर कोई कर सकता है, और ये बहुत एक अच्छी चीज है कि आप कर सकते हैं कि डाटा एनालिसिस है, जैसे कि एक सिंपल एनालिसिस है। फॉर द एग्जांपल ओनली आई विल टेल यू दैट if we create an Excel sheet and if we compare the subject wise mark list, then
we can easily tell that अरे यार इस सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स कम आए तो उस पे अपने को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. सीधा सिंपल एनालिसिस है. वी हैव टू डू एवरी डे with every product that data analysis we have to do. And after that aerospace, I was in GE for aerospace division. तो aerospace में जैसे कि व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे मैं आपसे आंसर चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ईवी फ्यूचर है क्या? स्टूडेंट्स, कैन यू आंसर? इलेक्ट्रिक व्हीकल. आई थिंक यू आर नॉट ऑडिबल. Yes. So, no. Yes, it's future. Yes. No, actually, there you are little wrong. EV is not future; it's happening. So currently, we are manufacturing here EV chargers, and we are manufacturing the complete EV base for the car here, and we are exporting to the Europe and US. Like for the Tesla, we are manufacturing here, like Tesla main multiple parts we are manufacturing. It's a future. So like infrastructure, we अगर अपन देखें कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पे आप जा रहे हो चार्जिंग के लिए आप देख रहे हो, तो वो जो सॉकेट होते हैं उसके 4 टाइप होते हैं. तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे उसके जो अलग डिजाइन बेस पे है. फिर उसका टाइप आ गया है कि कन्वर्जन टाइप पे. कुछ चार्जर होते हैं जो डायरेक्ट डीसी आउटपुट देते हैं, जिसको बस आपको फिट करना है, आपका उससे चार्ज हो जाएगा. कुछ एसी आउटपुट देते हैं, उसका आपका अगेन आपका जो बीएमएस सिस्टम रहेगा, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो उसको कन्वर्ट करके उसको जितना भी सप्लाई चाहिए उतना कर लेगा. वो एक पार्ट होगा. ऐसे अलग अलग ऐसी चीजें रहेंगी. तो वो ज्यादा फ्यूचर नहीं है. मैं अभी एरोस्पेस आपको क्यों बोला कि how many of you knows that BMW company conducted a flying car test before 2 years? So you can predict that where the future is going on. So if BMW is working with that flying object, and so it's an also company. I'm sorry, I couldn't remember the name. One of my friend worked in US for that company. That they are also conducting the R&D test for the complete EV, complete electric base flight. They are conducting that R&D. He was there for the internship purpose. I think that company is in Washington. So these are the general possibilities for the careers. Till this, do you have any doubts? Please unmute the student mic. Do you have till this point? I will have some. If anybody have doubt, come forward, take mic, and you can speak. And just let me know if because I just this much very I tell in very rush. I'm sorry, I did not have time to explain much more. So um, you can come in forward and ask question, any doubts till this point. No doubt. So yes. Basically, I forget to tell that career opportunity. Basically, we can categorize in 3 types: that private job, government job, and further education. This kind of, because if further education you can calculate as a job also, because like IITs, and they give us stipend with a very decent amount, so that depending on the which company sponsoring you. So one of my friend got up to the 96,000 per month. So you can calculate that also a career opportunity. And yes. So how can you be prepared for the challenges in future? So we will think that in textbook, from the textbook, we interviewer will ask the question. So it's not like that. He will not ask you the basic questions from the textbook. So how can we prepare? Na?
सो अपने सब गलत चीज क्या होती है कि आप अपन क्या करते हैं कि एक टेक्स्ट बुक के तक अपने को नॉलेज एक सीमित रखते हैं, तो वो मत कीजिए। कभी भी एक सिलेबस का एक मिलता है, पीडीएफ मिलता है, तो उस सिलेबस में रेफरेंस बुक मेंशन होते हैं। तो हमेशा एक एक्टिविटी कीजिए कि सपोज 5 बंदों का ग्रुप करके ट्राई टू नोट्स बनाइए कि यूनिट 1 है, तो 5-5 ग्रुप है, तुम इस सब्जेक्ट के नोट्स बनाओगे, हम इस सब्जेक्ट के, ऐसे करते करते ट्राई टू कवर मैक्सिमम नॉलेज। जस्ट आप उसके थ्रू मत जाइए कि हाँ यार ये पास करना है, बस इसको पास करके ये साल आगे अगले साल जाना है, इसके बाद अगले साल जाना है। तो ट्राई टू अवॉइड दैट, क्रिएट योर ओन नोट्स एंड बस ये मत कीजिए कि मैं मतलब ये चीजें हमने भी गलत की थी, मतलब अब जाके बहुत सही चीजें रियलाइज होती है। लेकिन वही होती है कि रीडिंग अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिए। और इंजीनियरिंग में बात ज्यादा तो कुछ है नहीं, लॉजिक बेसिस ज्यादा चीजें होती है। रीडिंग कीजिए, रिविजन्स कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस कीजिए। और कभी भी आपके घर में भी कुछ स्पेसिफिकेशन स्टिकर होते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट आती है तो उस पे भी स्पेसिफिकेशन स्टिकर होते हैं। कुछ भी चीज आती है उस पे वो रीड करने की आदत डाल लीजिए, उस पे नोट्स बने कि उस पे आईईसी स्टैंडर्ड लिखा होता है। तो आईईसी क्या होता है कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्लायंस होता है, कि मतलब आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ तो उसी हिसाब से आपकी वो चीज टेस्ट हुई है, ये आपको पता चलेगा। तो फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि इंटरनेट से ये चेक कर सकते हैं कि आईईसी में क्या क्या चेक होता है, इस प्रोडक्ट में क्या क्या टेस्ट हुई है, ये सारे, तो इसका टॉलरेंस क्या है। तो वो चीजें होती है, जैसे यूपीएस में आईईसी स्टैंडर्ड है 62040-3। तो दुनिया में आप किसी भी यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओ तो वो उसी मेथड से वो टेस्ट होगा, वही स्टैंडर्ड्स है मैं। और वही, और कोर्सेज कीजिए, एक्सेल पे काम कीजिए, पावर बीआई हो गया, एक्सेल हो गया, बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्निक है, प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमाइज करने की। रेंज बढ़ाइए, जैसे कि 3 इडियट्स में बताया गया है कि सक्सेस के पीछे ना एक्सेलेंस के पीछे भागो। तो एक्सेलेंस के पीछे जाओ, सक्सेस अपने आप पीछे आएगा। दिस आर द अपॉर्चुनिटीज, डू यू हैव एनी डाउट्स? Sir, Hmm? they are actually asking about your business. Business? Yes, about your Eaton company. business? Yes. Ah, yes, 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 yes. So it's Eton company is basically from Ireland country, Dublin city. There are 4 headquarters worldwide. First in Dublin, US. In US, I think it's in New York, and uh, in uh, in China, and one is in Mexico. So there are 4 headquarters with having 4 R&D centers. One US, Dublin, China, and India. India is luckily we have in Pune. So innovation center. So that's the thing. And let me have a look. Basically, we have here fuse manufacturing, MCB, ACB, switch, all type of switch gears. Generally, we are manufacturing here, and that power quality products like that single phase UPS, 3 phase UPS, we are manufacturing here.
I'm sorry. So generally we have all this kind of product, and most of we are exporting from here, and very few products because standards varies from country to country, continent to continental. So this kind of, and generally basically we have aerospace division in Pune, gear axle plant in Ranjangaon and Ahmednagar, and one more innovation corporate office in Pune. We have various types of warehouses across India, all over, in every country. Basically, Eton is in have reached in every country. So that kind of business we have carried out, and try to we will try to means I will try to convince that HR that if possible we can do a um, internship arrangement for your, but that will I can't promise because I will try. I have to discuss with the corporate office in Pune, and that one thing I can try to do. And any other doubt regarding your future possibilities? Future, please ask, because why it's all about your career, your future. So I think I have missed out something, but you can ask because through that questions only I got to know that, oh, this topic I left behind. So गुड मॉर्निंग सर। yeah, good morning. How are you? हाँ, अभी कुछ देर पहले आपने आपने कहा था कि जो एआई अमेजोन में एआई Hmm? थे आए सुपरवाइजर का आवाज़ आ रहा है ना। Yes, yes, हाँ, I yes. was, तो जो सुपरवाइज़र का जो आप कह रहे थे कुछ देर पहले कि अमेजोन की कंपनी है जो सुपरवाइज़र से रिलेटेड काम करती है एआई के थ्रू। hmm. तो जो हाँ, मुझे मतलब एक डाउट था कि जो सुपरवाइज़र है जी तो एआई ने उसने जॉब खा ली ना मतलब सुपरवाइज़र की। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है जो सुपरवाइज़र था उसने इतना एजुकेशन लिया इतना कुछ अपने एफर्ट्स लगाए तो वो एक तरह से गए एआई की हेल्प से। no. That's why I told you to learn AI, na, learn technique. If that supervisor got to learn AI, na, that he can go for the bigger post to handle the AI. But that is the thing, na, he couldn't update himself. Okay, I would like मैं इसके regarding एक story बताता हूँ कि that I read in You Can Win by Shiv Khera. That's a book. दैट एक आदमी था जो कुल्हाड़ी लेके जंगल तोड़ता था, मतलब उसका काम था कि पेड़ काटना है। तो होता क्या है कि एक नया बंदा आता है, वो यंग था, उसके पास एक्सपीरियंस कम था, तो फिर भी वो उससे ज़्यादा पेड़ काटता था। तो फिर वो बंदा गुस्से में आके बोला, "यार तू ऐसे कैसे कर पा रहा है? मैं तो इतने साल से एक्सपीरियंस हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ।" तो वो बोला, "कुछ नहीं, मैं जब भी पेड़ काटता हूँ तो उसके बाद ना मैं जो कुल्हाड़ी है उसका ब्लेड शार्प करता हूँ।" तो यही होता है कि शार्प करना है यानी अपने आप को अपडेट करना। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको उसके साथ अपडेट होना है। अगर आप अपडेट नहीं होंगे, तो आपको आउटडेट कहलाया जाएगा। आपको फिर तो एक तो वही जॉब करनी पड़ेगी, आप अगली पोस्ट पे नहीं जा पाओगे। तो दैट्स द व्हाई ना स्ट्रगल्स, वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, दैट्स आई टोल्ड यू एट द वेरी बिगिनिंग। And yes, I like that question very much, that somebody asked that question, that supervisor had to lose his job. Yes. Any other questions regarding the renewable robotics simulation? And pay more attention to the while your practicals, because there what you are implementing your theory into practical, and that's what you want, you have to do in future. और मैं एक सजेशन दूंगा, जो गलती मेरे से भी हुई थी, आप लोग वो मत कीजिए कि फ्यूचर पे ध्यान बाद में दीजिए। पहले जो आप सीख रहे हैं, पहले वो पूरा सीख लीजिए।
उस पे ध्यान दीजिए, उस पे फोकस कीजिए। कल का भी मत सोचिए आज मेरे को कॉलेज में ये पढ़ना है, तो उसके बारे में आप सोचिए, नोट्स बनाइए कि आज हाँ ये टॉपिक सीखना है। क्लास खत्म होते ही एक दो लाइन लिख लीजिए कि आज मैंने ये सीखा। शाम को जाके उसका रिवीजन कर लीजिए, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, बस हो गया। कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ज़्यादा तो प्रॉब्लम से तो बस प्रैक्टिस ही करनी है आपको। तो और मैंने देखा है कि मतलब ये मेरे साथ कुछ कलीग्स भी थे कि जो मतलब इंजीनियरिंग कहने के लिए तो की थी, लेकिन बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज भी नहीं आते, तो लिटरली बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है उनको। तो ऐसा मत कीजिए, हर एक फॉर्मूला सीख लीजिए, हर एक चीज़ भी सीख लीजिए। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये जाके फ्यूचर में क्या काम आने वाला है, फ्यूचर में क्या काम आने वाला है। तो ऐसी चीज़ नहीं होती, हर एक चीज़ काम आती है, हर एक चीज़ काम आती है। तो सीख लीजिए जितना भी है, उस पे फोकस कीजिए पहले तो। फ्यूचर का बाद में, फ्यूचर हो जाएगा आराम से, क्योंकि अगर प्रेजेंट में आपने फोकस किया, फ्यूचर आपका ब्राइट रहेगा, बहुत ब्राइट रहेगा। एनी फर्दर क्वेश्चंस? हॅलो सर. I was expecting that I will have much more questions. हॅलो सर. Yes. सर जसं तुम्ही सोलार एनर्जीमध्ये कामाला होता. मी सोलर मध्ये नव्हतो. मी जी मध्ये, विंड मध्ये होतो. विंडमध्ये. म्हणजे विंड मध्ये, मी तर एरोस्पेस मध्ये होतो, पण तिथे विंडचं होतं मॅन्युफॅक्चरिंग. सर मग हाऊ वॉज युअर एक्सपिरियन्स इन दॅट विंड? नाही ऍक्च्युली मी त्या डिव्हिजन मध्ये काम नाही केलं, पण मग बघायचो की ते रोटर्स वगैरे कसे बनायचे, ते जे ब्लेड्स होते ते, आणि खूप कॅल्क्युलेशन असायचे. तर प्रत्येक कस्टमरची डिमांड वेगवेगळी असायची. तर मग त्यानुसार डिझाईन्स चेंज व्हायचे. जसं मी तुम्हाला बोललो ना की R&D सेक्टरमध्ये तुमच्यासाठी खूप स्कोप आहे, डिझाईनमध्ये खूप स्कोप आहे. तर हेच कॅल्क्युलेशन तिथं, की हा कस्टमरला त्या एका स्पेसिफिक एरियामध्ये इन्स्टॉलेशन करायचंय. मग तिथं विंड पॉवर किती आहे, ॲव्हरेज. असं नसतं. आम्हाला जवळ-जवळ कधी-कधी 3-3 महिने कंपनीचे एम्प्लॉईज तिथं स्टडी करतात डे नाईट, की यार वाऱ्याचा फ्लो असा होतोय. आता मग हां, मग इतका स्पीड होईल तर आपली ब्लेड्सची साईज, रोटर साईज, आउटपुट इतकं जनरेट होईल. आणि सध्याच्या कंडिशनला हां, बरं झालं हा प्रश्न विचारला. सगळ्यात मोठा चॅलेंज काय आहे? ॲक्युम्युलेशन. ॲक्युम्युलेशन्स म्हणजे अशा गोष्टी जी एनर्जी ॲक्युम्युलेट करते, म्हणजे स्टोअर करते, बॅटरीज वगैरे. तर बॅटरीज हळू-हळू चेंज होत आहेत. पहिले कसं की होतं की लीड ॲसिड बॅटरी होत्या, आता लिथियम आयन्स, लिथियम पॉलिमर्स वगैरे आल्या. तर डेफिनेटली ह्या गोष्टी आता चेंज होत आहेत, आणि आय होप की तुम्ही जसं नॉलेज घेतायत की तुमच्यापैकीच कदाचित कोणीतरी या गोष्टी पण चेंज करू शकतंय. अजून पुढे काही क्वेश्चन्स? यूपीएस बद्दल नाही विचारलं कोणी. मी स्वतः यूपीएस मध्ये काम करतोय, काय काय होतं, कशा कशा टेस्ट होतात, तसं कोणी नोबडी असतं. तुमचे जॉब रूल्स वगैरे काय? जॉब रूल, पहिला रूल तर पंक्च्युअलिटी आहे. टाइम, टाइमची रिस्पेक्ट करायची. 9 वाजता 9 बजे आना है, 6:30 बजे घर पे निकलना है। ज़्यादा रुके तो एचआर का मेल आ जाता है कि आप रुके क्यों? तो आधे घंटे का विंडो मिल जाता है कि उसके आधे घंटे के ऊपर आप नहीं रुक सकते, कितना भी काम रहे। अगर रुकना है तो पहले तो एचआर को परमिशन लेना पड़ता है। तो उसके बाद रूल है कि कोई भी टेस्टिंग में पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। तो फिर टेस्टिंग में मैं आपको बताता हूँ हम जनरली टेस्टिंग कैसे करते हैं कि असेंबली, यूपीएस असेंबल होता है, फिर इधर आता है टेस्टिंग एरिया में, जो कि मेरा एरिया, मैं जहाँ पे लीड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे यूपीएस आता है। तो सबसे पहले तो हम हाईपोर्ट कंडक्ट करते हैं, हाईपोर्ट, हाई पोटेंशियल टेस्ट एंड HVIR basically, high potential test. So can anybody tell me that why we conduct that? Anybody know that? That's very basic, and we have to conduct for the safety, as it not mentioned in the IEC standard, even though we conduct. So can anybody? Okay, for the safety purpose, we apply up to the 2 kV, 2000 volt up to the supply we apply, and we short all terminals, and so that we check that if any there is any leakage current.
So if it's below than 2 milliampere, then it's okay. We pass the system. So after that, we have to connect input, output, battery, short circuit setup, bypass supply, that kind of connection, all connections we have to do with the UPS. Three phase I'm talking about. So हम क्या करते हैं कि इनपुट टॉलरेंस चेक करते हैं, 15% प्लस माइनस होना चाहिए। आउटपुट चेक करते हैं 230, कस्टमर एज पर कस्टमर डिमांड 230 टू 40 होता है, तो वो होता है तो बैटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट जब भी परफॉर्म करते हैं तो उसका टारगेट क्या होता है, सिस्टम पास कब होता है कि शॉर्ट सर्किट करें तो यूपीएस ट्रिप होना चाहिए, ट्रिप होके अगर रिस्टार्ट करें तो चालू होना चाहिए, मतलब कि इनबिल्ट उसमें शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन होता है। ये एक जनरल हमारा टेस्टिंग का रूटीन होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेशन है, मतलब सब कनेक्शन कर देना है और ऑटोमेशन स्टार्ट कर देना है। तो एज आई टोल्ड यू ना, इट्स जस्ट लाइक एआई बट at the very basic level. So in that testing engineers how to conduct the job, this kind of job. After that we have to conduct burn test and hit run test. तो हम 80% लोड लगा के यूपीएस को हम रनिंग कंडीशन में रखते हैं। It varies product to product that how much time of burn test it will go on like that. So anybody have any doubt? Okay, sir. No further doubts from our side. Thank you, sir, for all your valuable words and for such a great session today. Thank you from our institute. Thank you, sir. That's my institute too. Uh, Surely, sir. Surely, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you. Now Thank I would you. like to invite Honorable Principal to say a few words. So, Yeah. Yes, Nikhil, thank you very much for pitching and for just telling all the students about what to do and what not to do in the college life. So that's great. And you are the right person who basically can tell this to the students. Because whenever the teachers are speaking such kind of things, it happens like ki, "Arey Baba, a teacher is there and he is always going or she is always going to speak in that way." But whenever a big brother or a, like you just tells these things, na, it helps a lot to the students. And also they just get a motivation from people's kind your kind ki, these are the students or you are from our polytechnic only, you were also sitting on in the same class. Currently all these people are sitting maybe in 209, so that was a classroom where you have also studied. So they are knowing ki Baba, chalo, ye, this is a kind of guy who has already studied from this same classroom and he has mastered it in a very good way. And he is leading a very good company now. So that would always give a motivation to my current students. So thank you very much for sparing your time and taking it as a responsibility to handhold these students. Thank you very much on behalf of Sanjani Group of Thank Institutes. Basically, Thank this you. year we are celebrating Sanjani Ruby Jubilee year. 40 years has been completed for Sanjani Polytechnic. So on that behalf, you are the first my storyboard alumni who has delivered the session to the electrical department. So you are the pioneer for this Sanjani Ruby Jubilee. Thank you, sir. It's my pleasure, and it's good to see you again and heard your voice after a long time. So, Yes. it's Okay. very So thank you very much. Yes. thank you so much. thank you so much, sir. Now I would like to invite Head of Electrical Department, Mrs. Kunta ma'am, to say a few words. Uh, Good morning to all of you. Very happy to see you, Nikhil, after a very Yes. long time. Yeah, And yeah. the improvement in you is very remarkable. And whatever you told to ये the ऐकूनच student, खूप छान वाटलं की yeah, काहीतरी yeah. इम्प्रूव्हमेंट. जो भी आपने स्टूडेंट्स को बताया, आपने ईच एंड एवरी एरिया यू कवर्ड, लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल, दिस स्मॉल the basic skills are there and very high skills are also you told. You covered almost all areas where they can work, and you also told what to do, what not to do in college life.
same as the principal, our honorable principal told, when the teachers told to the student, they will not take that much seriously, but their younger brother, if they told, they will take definitely on their side. So thank you very much, and hope so we will meet physically next time, so that the interaction will be more effective and student can ask more questions to you. Yes. And whatever the areas you are working, it is fabulous. Whatever the new technologies you told, that flying vehicle and all these things are really important for them. As the students' curriculum we see, they don't have that much industry based curriculum they have. So if the any industrial persons told them, it will definitely help them where they have to work and where they don't need to work. The new technology always help them. I always told to the students, take new technology, kindly join new classes which will give you more industrial based knowledge. So I think from your sessions they definitely get motivated to do that. Thank you so much, and we will meet soon. Thank you, Nikhil. Yeah, and the problem with the motivation is like that now that suppose we got anything by the year that oh, this have to do and this is the best for our future now. So it sometime it influence like for 3 to 4 days only. After that, people get to in original routine or back to the daily life. So try to avoid that also. That keep motivated for every day, and definitely it will give result. Hard work, there is no alternate to the hard work, so that you have to keep doing hard work. And it's a very a few minutes I will take, I'm sorry, but it will easy to say anybody that oh, this guy is sitting in a very big multinational company having a good position, but only I know that how I conquer the challenges in my life, and now I'm here. So, and actually honestly I want to see everybody there. They also have to go in a very different kind of technologies, different type of companies, and like that only. And all the best for everybody, and hope you will follow the all rules. Just just focus, nothing else. Just do hard work, focus. That's the key of success. That's the only thing. Yes, surely. And I want to say thank you to the SARC committee, SARC member who has organized you, who has communicated to you and invited to you. Thank you so much. I want to say thank you to Principal Sir also, because under his guidance only this committee and all this are working. So thank you so much, and I thanks to Narkete sir who done the or whatever the organization organize very well, because on the time we organize this all these things. And thank you student who listen carefully, and I hope so it will motivate to you. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. It gives me immense pleasure to extend a vote of thanks on behalf of our institute for this event. First of all, I would like to thank our today's guest of honor, Mr. Nikhil Aglave, for his precious time for today's event. Nextly, I would like to thank our principal, Mr. A.R. Meriker, and head of electrical department, Mrs. M.R. Gonzar, for organizing this event, along with our honored present staff, Narkedi sir, for their guidance. Last but not the least, I would like to thank our today's audience for their mutual cooperation for this event. I would extend vote of thanks to all the organizing team. And lastly, I hope you all enjoyed this session. Now I declare that the session is over. A feedback link is shared in the chat. All have to fill the form and your attendance will be marked by the same link too. Thank you all. Any anybody want to ask Riley? Okay, then Thank you. Thank you.